Hello friends and welcome to my channel. Today we will learn all usage of ought to in English grammar. So let's get started. So ought to का हिंदी मीनिंग होता है चाहिए. It's a semi modal verb. It's less common and more formal than should. It's used to express strong advice, which means ought to का यूज हम यूजुअली नहीं करते हैं, बट जब हमें स्ट्रॉन्ग एडवाइस एक्सप्रेस करनी होती है उस टाइम पर हम ought to का यूज करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ ought to, एंड द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस ought to प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. लेट्स अंडरस्टैंड इट थ्रू एग्जाम्पल. तुम्हें वहां जाना चाहिए. यू ought to go there. तुम्हें होमवर्क पूरा करना चाहिए. यू ought to complete your homework. तुम्हें हरी सब्जियां खाना चाहिए. यू ought to eat green vegetables. तुम्हें रोज स्कूल जाना चाहिए. यू ought to go to school daily. उन्हें समय से काम पर जाना चाहिए. They ought to go to work on time. तुम्हें पानी की बचत करना चाहिए. You ought to save water. तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए. You ought to study. उसे डांस सीखना चाहिए. She ought to learn dance. तुम्हें पढ़ाई में उसकी मदद करना चाहिए. You ought to help her in studies. तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए. You ought to wake up early. हमें रोजाना व्यायाम करना चाहिए. We ought to exercise daily. उन्हें यातायात नियमों का पालन करना चाहिए. They ought to follow traffic rules. तुम्हें समय पर सोना चाहिए. You ought to sleep on time. तुम्हें पियानो सीखना चाहिए. You ought to learn piano. हमें क्लास कैप्टन की बात मानना चाहिए. We ought to obey the class captain. So friends, these were 15 sentences using ought to. अब हम ought not to से रिलेटेड कुछ sentences सीखेंगे. So first of all we will see the structure. And the structure is subject plus ought not to plus V1 plus object. So यहाँ पर हम ought to वाले नेगेटिव सेंटेंस सीख रहे हैं. So let's understand it through example. The first sentence is तुम्हें बैग जमीन पर नहीं रखना चाहिए. You ought not to keep the bag on floor. तुम्हें किताब खुली नहीं छोड़ना चाहिए. You ought not to leave the book open. हमें क्लास में शोर नहीं करना चाहिए. We ought not to make noise in the class. तुम्हें फूल नहीं तोड़ना चाहिए. You ought not to pluck the flower. तुम्हें जोर से बात नहीं करना चाहिए. You ought not to speak loudly. तुम्हें बार बार वहां नहीं जाना चाहिए. You ought not to go there again and again. हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए. We ought not to eat junk food. हमें सारा वक्त वीडियो गेम्स नहीं खेलना चाहिए. We ought not to play video games all the time. हमें जल्दी जल्दी खाना नहीं खाना चाहिए. We ought not to eat food in a hurry. हमें स्कूल बैग गंदा नहीं रखना चाहिए. We ought not to keep the school bag dirty. So friends, these were few sentences related to ought not to. Now we will understand ought to have. Now let's understand the structure of ought to have, and the structure is subject plus ought to have plus verb का third form plus object. So friends, ought to have वाले sentences में verb का third form यूज किया जाता है. Let's understand it through examples. And the first sentence is हमें खाना खा लेना चाहिए था. We ought to have eaten the food. हमें बाजार चले जाना चाहिए था. We ought to have gone to the market. हमें जल्दी आना चाहिए था. We ought to have come early. हमें खाना बना लेना चाहिए था. We ought to have cooked the food. तुम्हें होमवर्क कर लेना चाहिए था. You ought to have completed the homework. तुम्हें
काम पर जल्दी जाना चाहिए था। You ought to have gone to work early. हमें संगीत सीख लेना चाहिए था। We ought to have learned music. मुझे प्रेजेंटेशन दे देना चाहिए था। I ought to have given the presentation. तुम्हें रसीद जमा कर देना चाहिए था। You ought to have submitted the receipt. मुझे अम्ब्रेला खरीद लेना चाहिए था। I ought to have bought an umbrella. So friends, these were few sentences related to ought to have. Now we will understand few sentences related to ought not to have. So let's understand the structure, and the structure is subject plus ought not to have plus V3 plus object. Let's understand it through examples. And the first sentence is तुम्हें बाजार नहीं जाना चाहिए था। You ought not to have gone to the market. तुम्हें जल्दी नहीं जाना चाहिए था। You ought not to have left early. तुम्हें पेंसिल नहीं तोड़ना चाहिए था। You ought not to have broken the pencil. हमें ये नहीं खरीदना चाहिए था। We ought not to have bought it. तुम्हें घड़ी नहीं बेचना चाहिए था। You ought not to have sold the watch. So these were few sentences related to ought not to have. So friends, in today's video we have learnt complete usage of ought to. So if you all found this video useful, please don't forget to like, share and subscribe to my channel. And thank you so much for watching the video.